जैसे ही आप उसको अलाउ करोगे it यूसेज ऑफ आई थिंक कोई भी एग्जिट लैग टाइप का एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी कनेक्ट करने में. You should be able to connect normally without any use of that application. Still, अगर किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं नेटवर्किंग रिलेटेड तो वो ओपन कर सकते हैं एक टिकट एंड वील उनका जो एग्जैक्ट उनका आईपी है विल रन इट बाय आवर होस्ट एंड विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर देम. ठीक है, तो दैट इज आल्सो वन थिंग. Abhi, I know a lot of you guys, we just launched our store and I saw कि a lot of you have already got priorities for your day one. दो queries थी that I really want to clear. First is all priorities will जो उसका validity है starts from the day server kicks off. So the second server starts, आपका time उस दिन से count होना शुरू होगा. First. And second is अभी बहुत लोगों को अपने डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा होगा, उनका प्रायोरिटीज अभी भी नन दिख रहा होगा, so do not worry. The team is working to make sure कि before launch आप सबका प्रायोरिटीज वहाँ अपडेट हो गया होगा. So do not worry about that factor at all. Okay. Rishit, fill me in if I'm case मैं कुछ भी मिस करूँगा. Before moving ahead, very sorry everyone. This is no joke, no prank. Server एक दिन और बस delay होने जा रहा है. It's gonna be on second instead of first. The major reason behind the delay will be it's हमारे जो partners है server में Anna Velocity Gaming VLT, as you must all know. He and his entire staff is busy. All the creators are busy tomorrow as उनका कल semi-finals है and वो लोग available नहीं होंगे, तो it's not fair to launch the server without them. And second को Lex भी आ जाएगा, so we have a win-win situation in all terms. So very sorry for again a day delay, but nothing can stop it from launching on second. We know it's been tough, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बट एक दिन की बात है. आप लोग भी मैचेस देखो कल, वीएलटी को सपोर्ट करो एंड Yeah, guys, परसों से we लेट्स need गेट to. गोइंग. या And I think, I mean, just to keep you guys company, because we all will be watching the match. So, if you guys would want, हम लोग will create a VC. या We'll sit here and watch the match together. ठीक है? So, ऐसे dishearten मत हो. कल we'll do something. It's important to support the team, guys. So yeah, I think हम लोग भी miss out करेंगे अगर हम लोग कल खेल रहे होंगे, right? So yeah, don't सो worry. हम लोग will या keep you guys company. एंड regarding second, we'll make it live at 7 p.m. or 8 p.m., probably 8 p.m. So Yeah, we'll most probably decide, 8 p.m. but yeah. So 7 या 8 बजे second को it will go live. It's just about one day, and I think you guys are smart and patient enough कि एक दिन और वेट कर लो चाहे इतना रुके. Yeah. But let's move ahead with the Q&A. Sorry. Okay. ठीक है. Okay. So I'll take it further from there. Um. Okay. So connections के related I've told. Second very important thing is guys creating realistic character names. Um. When I say realistic character names, आप लोग जानते हो जब भी आप कोई नाम रख रहे हो आप एक बार just give it a very hard thought about कि क्या ये character IRL एग्जिस्ट कर सकता है इस नेम के साथ. अगर कर सकता है मतलब यू आर टेकिंग द राइट कॉल. अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैंने नहीं सुना है या प्रॉब्लम मैं कभी सुन भी नहीं पाऊंगा, देन यू आर डेफिनेटली यू हैव टू रिजेक्ट दैट नेम योरसेल्फ.
ठीक है, इट्स अ वाइट लिस्टेड इन्वायरमेंट गाइज, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ के लिए आपको मॉडरेशन की ज़रूरत पड़े. आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू गाइज हैव टू स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ. ठीक है. um do's and don'ts in initial phase, I think try to start following your RP. Everyone is arriving new in the city. ठीक है. You can plan out your story. आप अपनी story उस हिसाब से plan करो कि आप new आए हो, purpose क्या है. I mean those things I don't want to spoon feed a lot. Even for, I would say, the emergency services, server on day one will just start as a place where they arrive, they would go, they would request their job, everything will fall into place. तो डे वन है, एक्सप्लोर कीजिए. डे वन ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर अ कॉप, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, आई मीन जस्ट इल जस्ट बी वर्क फॉर यू. सर्वर में वी हैव मेड श्योर दैट देर आर थिंग्स कि अगर वो लोग डे वन अगर वो भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, देर एक्सप्लोरिंग फॉर देमसेल्व्स, it will still be there'll still be a lot of things to do, and everything would be functional for them as well. वो कहीं पे उनकी RP restrict नहीं होगी for day one. I'm pretty sure it's gonna be like more interaction for sure. तो उस चीज़ पे फोकस करें. And very, I think if it's not here already, for all the people who are whitelisted, यहाँ पर एक bugs and issue. Okay, so I'll let me, I can screen share here as well, right? It will be public by tomorrow. तो फिर भी जस्ट टू गिव यू गाइज अ लिटिल आइडिया, इज ऐसा एक चैनल आप लोगों को दिखेगा स्टार्टिंग टुमारो. एंड दिस इज बेसिकली, इफ इन केस यू फाइंड अ बग, आप लोग हम लोगों को अगर हेल्प करते हो, इट विल बी द डेवलपमेंट प्रोसेस वुड बी मच स्मूदर. Any bug that you find, just come here, create a new post, put क्या bug है. If you have a video, अगर आप shadow play use करते हो, amazing, put a video here. Or just put the steps to reproduce कि वो bug तक आप कैसे पहुंचे. How do you think कि that bug can, would happen again for someone else. So this is important to have a much faster process, guys. Since uh, this is gonna be constantly under development, हम लोग constantly कुछ ना कुछ develop कर ही रहे होंगे. Bugs is something which you cannot dodge, but I'm pretty sure कि if you guys keep educating us, we will be able to clear more bugs more quickly. Okay, so that is one for sure request that I have. So ये अभी सेटअप हो रहा है, लाइक दिस इज स्टिल बीइंग सेटअप. वी आर सेटिंग सम टैग्स एंड थिंग्स जिससे पर्टिकुलरली आप लोग राउट कर पाओ कि कोई बग अगर आपको मिला है तो वो किस डायरेक्शन का है, नेटवर्किंग रिलेटेड है या फिर कुछ और है. सो विल मेक श्योर कि वो सब चीज़ें हों. तो कल के बाद से you guys will have access to that, or anyways whenever you guys in the server, then only उसका usage will make sense, right? So now uh, I think, guys, if I missed anything, nahi to we can just move to Q&A. आई गेस यू हैवंट, आई मीन बीच में कुछ पीटीएस के याद हो तो देन वी कैन ऑब्वियसly कंटिन्यू. Okay, okay, so we can start. Okay, so first wala ka to I think we have answered. Pandit ji, thank you for asking, but I think that question has been answered. Okay, server 5M पे होगा, Ronan. Yeah, so that's gonna be in 5M, but I think people already answered.
Okay, so moving on. Steam required to be running in the background for sure. Amans, I think without the without Steam running in the background आप नहीं खेल पाओगे. Steam is where I mean we use it as an identifier to identify कि who's playing. तो तो वो बहुत important है. So please make sure कि you have Steam running in the background. Then let's read Havers. So first, for EMSRP, person comes with bullet inside his body and says, "Jaldi treat karo." Is it not possible? So please understand, if EMSRP takes time. ये मैंने लास्ट में कवर किया था. I think you guys need to show some uh, you know थोड़ा तुम लोग को रिस्पेक्ट शो करना है टुवर्ड्स these kind of RPs जो कि आप लोगों के लिए है सर्वर में. These are more helpful to you. Though we have made कि there are a lot of mechanics which will restrict you to do जल्दी treat करो now. बट आई फील कि हम लोगों को नहीं लगाने की जरूरत पड़नी चाहिए थी वो चीज़ें. आई थिंक यू गाइस शुड हैव बीन एबल टू डू इट yourself. So I in for I think starting on the right foot, मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक इस बार आप लोग समझोगे इसको. So that is important. Possible ban the word RR in RP. Saying हमेशा RR करता है about a certain someone creates wrong impression for that person. RR. So पहले तो I think there is, see the problem with this sentence is like तो it's the character and the IRL self should be very separate. तो even though कहते हैं I think if it's being said in there could be same lines जो दो तरीके से बोली जा सकती हैं. अगर in a distasteful manner someone is saying those lines and those words for someone, I condemn it personally. I think कि that is not right, that should not happen. But if it's directly to the character, I mean I think people do have matlab should have that privilege to attack each other's character in RP. I mean that's for sure. स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग गैंग आरपी. मैंने ये चीज नोटिस करी, गैंग आरपी में एक बहुत बड़ा पर्दा लोग लगा लेते हैं इस चीज का कि हम तो गैंग है, कुछ भी बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं, चाहे पीडी हो चाहे सिविलियन हो. सो आप थोड़ा सा कंसिडरेट होइए. एंड आप खाली आरपी तक के लिए गैंग है, रियल लाइफ गैंगस्टर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है. यहाँ पे सब आरपी करने आए हैं. तो थोड़ा सा उस चीज को लेके, एंड द पॉइंट सेड आरआर एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टर्म्स गिवन टू फ्यू पीपल, एंड उनको जब भी मिलना एंड डेलिबरेटली इस तरह की बातें करना, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट. अगर किसी सामने वाले इंडिविजुअल को अच्छा नहीं लगेगा, वो टिकट रेस करेगा, actions will be taken. So be considerate about it. आगे से please. Thank you, Goli bhai. And last is humble request to the entire staff and the people doing RP in Soul City. Civilian RP is a beautiful thing, guys. Don't let it die. हम लोग जैसा कि I think कल मैं और गोली भाई की स्ट्रीम पे हम लोग बात कर रहे थे. There are a lot of things planned. और अपना आप लोग imagination restrict करके क्रिम मत करने. Just because if you want to do civilian RP and आप क्रिम इसलिए करने लग गए because you think कि there are not enough things to do, ऐसे मत. ऐसा ये थॉट प्रोसेस बंद करना पड़ेगा कभी ना कभी. आई थिंक द वे यू गाइज नीड टू थिंक इज देयर इज एन आइडिया विच यू गाइज थिंक ऑल्सो इज फीजिबल, जो हो सकता है वो आप लेके आओ एंड वील डू दैट. एंड बट फॉर दैट यू नीड टू शो प्रोग्रेशन ऑल्सो. ठीक है, सिर्फ आइडिया ही जरूरी नहीं है, यू नीड टू शो प्रोग्रेशन आफ्टर इट. ठीक है, तो अगर आप करोगे तो इट विल बी अमेजिंग. And we have a lot of things planned. I'm pretty sure कि you guys will love it. तो for sure you know वो बहुत ही you know important एक एक एस्पेक्ट है. विल मेक श्योर कि there'll be mechanics जो डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे फॉर इवन गैंग्स टू रिलाई ऑन civilians for a lot of things in future, जिससे कि देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस. ठीक है,
तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हम लोग बोलते आ रहे हैं कि विथ वीएलटी रोल प्ले इट वाज एजुकेशनल फॉर अस, तो हम लोगों ने काफ़ी लर्न किया है, दैट वाज लर्निंग फॉर अस, एंड a lot of things we've already implemented and we'll keep doing that. ठीक है, so we keep going back and forth. Okay, so moving on to the next one. Is the server low end PC friendly? If it isn't, can we apply FPS mod as Goldie said? Um, it is very optimized right now, जैसा कि मेरे को लगता है for sure. एंड आई डोंट थिंक कि आपको कोई FPS मॉड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी एरिस. Try playing the server. It should feel very optimized. Else open a ticket. Let us know क्या problem हो रहा है. We'll see कि if it's entirely कुछ एक script is being becoming a reason for people having a hard time or an MLO or anything. We definitely want to know that feedback. But अभी जैसा कि हम लोगों का feedback है, in I think usually we will be 10 to 15 people while doing aggressive testing. तो उस टाइम पे वी हैव हैड रियली गुड रिजल्ट्स, तो अभी तो मेरे को वो चैलेंज नहीं दिखता है. What is the number of slots we want to start somewhere slow and then grow? So 120, 100 के बीच में कोई विल पिक अ नंबर. इट्स नॉट दैट कि हम लोग चाहते नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले दिन एंजॉय ना कर पाए. द ओनली रीजन ऑफ वी डूइंग दिस इज कि दैट विल बी द स्ट्रेस टेस्ट फॉर द सर्वर, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि जितने भी खेलें they get the best experience rather than we push it to a limit जहाँ पे uh, so धीरे धीरे slowly and gradually I think we take baby steps on server slots. What time server launches? I think between 7 and 8, guys. Till when will all the PD responses come? So Flash. By tomorrow evening, around 5 o'clock, everything will be up for PD responses. Thank you. Okay. Any idea server slots कितने होंगे? Reconnect trio कितने time का मिलेगा? Cadbury, can you uh, tell me how much is the reconnect The trio time? reconnect time will be for 5 minutes. For 5 minutes, guys. So 5 minutes, we also felt ki would be more than enough for anyone who has crashed for genuine reasons would be able to reconnect into the server. If we didn't took any prior pass, then how long does it take to connect? I mean, are we gaming? This is a really difficult question for me to answer. I think there's no right answer to this question. Okay, so we'll know apparently after few days of server running, you would know ki what times are easier, like I mean, what things I think are more analytics rather, उसका कोई आंसर नहीं है. ठीक है, so OGX, can we pick a name inspired from anime? Yes, you can. मैं वही कह रहा हूँ, जब भी आपको कोई नेम पिक करना है, just think of it in a way कि can this be a name of a character IRL या फिर fiction? In fiction आपको बस ये सोचना है, जैसे in anime I see a lot of I also follow a lot of anime, तो कभी alias होते हैं. Aliases cannot be name. एलियस कैन बी समथिंग जो आप लोगों को बताओगे जब वो आपसे आपसे पूछेंगे, बट आपका जो आईडी कार्ड होता है, द लीगल डॉक्यूमेंट दैट यू हैव शुड हैव अ प्रॉपर नेम. ठीक है, सो अगर मेरा नाम, लेट्स से मैं चाहता हूँ सबको कि वो मेरे को आई मीन एनीथिंग, इफ आई से कि मिस्टर एक्स बुलाए मेरे को, सो फॉर देम टू कॉल मी मिस्टर एक्स इट कैन नॉट बी माई नेम. लेट्स से माई नेम वुड बी लाइट एनीथिंग और हान लुई वटेवर जो मेरे कैरेक्टर का नाम होगा, जब वो मेरे से पूछेंगे नाम क्या है, आई कैन टेल देम कि ये नाम है मेरा, विच इज मिस्टर एक्स. सो दैट इज ऑन मी, बट माई डॉक्यूमेंट नीड्स टू शो द रियल नेम. सो ये हो गया. कैन वी कीप अ डिफरेंट इन गेम नेम अदर देन द बैक स्टोरी गिवन ड्यूरिंग द वाइट लिस्ट फॉर्म? हाँ, मतलब अगर इफ यू हैव फॉलो द सेम बैक स्टोरी
बट अगर नेम इज बिकमिंग एन इशू जो अगर रियलिस्टिक नहीं था, वैसे हमने अभी तक शायद वी हैव गिवन पीपल विंडोज, काफी सारे लोग होंगे आप लोगों में से जिनके हमने टिकट ओपन करके उनको बोला है कि आपका नाम रियलिस्टिक नहीं था बट वी लाइक द बैक स्टोरी सो वी वाइट लिस्टेड यू. I am saying, I'm telling you guys again कि we have been super lenient on that, but going forward हम लोग नहीं रहेंगे. So since अब हम लोग multiple times बता चुके हैं कि थोड़ा सा realistic name रखना है, so moving forward जो whitelist applications होंगे उसमें we'll be rejecting on basis of those kind of names. So अभी थोड़ा सा ध्यान रखना. But for now I think you can change, but do not change your backstory at least until if you want to inform the team. Please take care of unrealistic jumps and stunts, and people should have fear of death. This will improve more realistic way of doing. This is a player driven rule. मतलब इसमें जितना हम मैकेनिक साइड से टेक केयर कर सकते थे घोस्ट ओपी, आई थिंक हमने कर लिया है. जो चीज़ें इसमें हम नहीं कर सकते हैं वो है कि जब इफ़ आई पॉइंट अ गन एट यू, वो फेयर जो है वो आपको अपने माइक के थ्रू ही शो करना है. तो दैट इज़ एंटायरली ऑन द रोल प्लेयर एंड वील कीप अ वेरी क्लोज आई फॉर पीपल टू मेक श्योर कि वो फॉलो करें, बिकॉज विदाउट दैट देर विल नॉट बी immersion. Will there be entry without? There for sure will be. I mean, it's not required. It's just something which gives you priority, matlab, in the number of slots. इमोट बाइंड गाइज, आई नो दे दैट आप लोगों ने बहुतों ने 5M से इमोट बाइंड्स करके रखे हुए हैं. सो सैडली द टीम इज स्टिल वर्किंग on restricting you guys to do that, but मेरा रिक्वेस्ट है because since everyone is here, I would highly recommend you guys to stop doing it. Just stop using the emote binds for gaining advantage. Emotes आप लोगों के रोल प्ले एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए हैं. Emotes आपके you know emotes are not there for making you have a upper hand in situations. ठीक है, so do not misuse emotes. And वो binds अगर हैं तो वो निकाल देना प्लीज़. कैफे कौन सा है? आई मीन दिस इज समथिंग आपको आरपी में जाके एक्सप्लोर करना है. दिस इज नॉट, आई थिंक ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, गोइंग बैक टू माई प्रीवियस पॉइंट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर इफ़ यू गाइज हैव योर स्टोरी इज दैट यू आर अ बेकर, तो तुमको ये सोचना है कि यू विल बी अ बेकर ओनली. और अगर इफ़ यू want to open a coffee shop, it will be a coffee shop only. Do not think कि सर्वर में अगर मैं आज बर्गर शॉट डाल देता हूँ तो you will become a person who makes really amazing burgers. नहीं, your backstory should stick to what you have written. वही रहनी चाहिए. और मूविंग फॉरवर्ड हम लोग जो एसेट अवेलेबल होंगे उसके वो करवाएंगे. Do not think the other way. ठीक है, there is I think इस पर you guys need to think differently. ठीक है. um please change VC region to India. Okay, nice PDS, but can you check region क्या है VC region? Currently, it's Singapore. Singapore क्या is every is like, can you guys put an off topic chat if a lot of you are having problems with it? Yes, since most of people are okay, so we'll keep it this way. ठीक है, so where are I? So ये हो गया है. I got disconnected, and we will get disconnect prior? Yes, 5 minutes reconnect prior. What about LSPD interviews? When are they gonna help? Ratio. This is what your character needs to do, right? So you have
just for your scenario, let's say he you already know that you have I mean interview letter from a department, and your character, let's say, arrives in a new city. So just be creative and think ki what he should do. Okay? And you will know you will get answers to this. Okay. Slots already covered. Slots. A lot of people have slots question. Okay. So I think काफी सारे questions जब हम answer कर रहे थे, you guys had repetitive questions. So okay, are crosshairs banned? Server will have its own crosshair. External crosshairs are banned. ठीक है? I hope मतलब I'm clear on this कि सर्वर में ऑलरेडी एक क्रॉसहेयर होगा. So okay. So you know, I'm saying that external crosshairs will be banned. So फिर से LSPD के फॉर्म्स ओपन होंगे. Definitely होंगे. This is the first batch. Um, so yeah, for sure they will open. Rashid, do you want to take few, or Rishit or Mm-hmm. Flash? Anyone? Are we on the I'll Kalash point, right? yeah. I'll just be back one second. Mm-hmm. So Kalash ka point is basically परमा के बारे में. So परमा is never forced. Mutually जब decide होता है तभी होता है. So if there's any RP scenario ongoing और ऐसा कुछ lead हो रहा है जिसमें there's an encounter या फिर कुछ ऐसा scenario जिसमें you can do a perma, you want to do a perma for your character, तब then you can tell the other guy कि हाँ I want to take this way. So ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी तभी पर्मा होता है, नहीं तो पर्मा कैरेक्टर कभी मतलब फोर्स नहीं करते हैं पर्मा करने को. सो आई होप कलाश दैट इज गुड. हाउ अबाउट अ लिमिट टू डू जॉब सो दैट ग्राइंडर्स कम हो जाए लोग. सो एवरी जॉब माइट हैव अ कूल डाउन और वो सब तो मैकेनिज्म से सेट करा हुआ है. सो ये चीज़ तो आपको सर्वर में जाके ऑनेस्टली फाइंड करनी पड़ेगी कि हाउ वी आर गोना प्रिवेंट द इकोनॉमी एज वेल, एंड हाउ सर्वर आगे कैसे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगा सो दैट इट वोंट लाइक फ्लड विद ग्राइंडर्स एज वेल. और देयर इज मोर वेरी कूल स्टफ आगे. सो ये चीज़ उसमें फिगर आउट हो जाएगी, बट स्टिल सजेशंस आर स्टिल अप. सो जैसे जैसे आप लोग खेलते जाओगे तो उसमें हमें भी सजेशंस देते जाना, बग्स एंड इश्यूज रिपोर्ट करते जाना, तो दैट विल हेल्प लॉट. Okay. So yeah, I'm back. Thank you. तो आई थिंक डिड यू आंसर दिस. क्या सोल या सिटी में क्वांट भी यूज कर सकते हैं? आई थिंक वी यू गाइस कांट. क्वांट भी डजंट वर्क. विल बी ऑन प्योर मोड लेवल 1 गाइस. सो आई थिंक जिन लोगों के मन में क्वेश्चन है उसका आंसर इससे हो जाएगा. एनवी वर्क्स फाइन. क्वांट भी प्रोबेबली वोंट. तो कुछ मॉड्स हैं जो नहीं वर्क करते, बट दिस इज फॉर यू गाइस ओनली बिकॉज दिस इवेंचुअली एड सम सिक्योरिटी. सो या, नाइस क्वेश्चन फ्लैश. चला सकते हैं चॉपर रोड पे, बट वो चलाते चलाते वो रास्ता जो है वो सोल सिटी से बाहर जाता है, वो वाली जो रोड है. That's what I wanted to address over by that question. Thank you, Light. ठीक है. तो the HUD will have thank you to Mozart, the HUD has a altitude meter. So थोड़ा रोड पे नहीं चलाने का. ओके. अगर या तो ऑल्सो अबाउट रेजोल्यूशन लो कर सकते हैं. हाँ, रेजोल्यूशन यू कैन लोअर रेजोल्यूशन, बट एस्पेक्ट रेशियो यू कैन नॉट चेंज.
ठीक है. Aspect ratio is a thing we want कि वो standard ही रहे. Stretch resolution, we really don't want the game to become, we want it to be more chill environment. हम लोग ने बहुत सारे ऐसे mechanics हैं जिससे कि it will be more realistic in nature. तो वो चीज़ें उसको force करती हैं. So it's an experiment for us too. We'll see, but I think it should be good. मतलब it should be something new. Um, yeah. Okay. क्या okay, अगर सारे devs okay, okay, guys, I saw a lot of our devs, they got interviews with cops. So can we start our character progression from day one, like not completely jumping into progression, but step by step? You definitely should, because see the way we are setting you up in the server, Afi, कुछ इस तरह से it's picturized that you are arriving into a new city, and that's why if you guys have not अभी तक hint pick नहीं किया आप लोगों ने, तो in our graphics हम लोग we show boarding passes, tickets, airport lobbies, uh, काफी सारे वो जो elements हैं, they are not just for cosmetic or वो we wanted you guys to pick from there कि you guys are just arriving to a new city. Pretty much no one there would be claiming कि मैं बहुत पहले से हूँ यहाँ पर. Everyone would be that we know a little bit. Try to explore as much as of you can. ठीक है. So which graphic modes are allowed? ऐसा प्योर मोड 1 के अंडर अगर आपका कोई भी ग्राफिक मोड चलता है, इट्स अलाउड. जैसा मेरे को पता है शायद पॉइंट वी डजंट वर्क, बट एनवी वर्क्स फाइन. एएफके के क्या सर्वर में यस होना चाहिए. So what about cop prio? For cop main, can we know like कब से होगा, so that we can take normal priority? Okay. So to address cop prios, there will be department priors for everything जहाँ पे department related role play involved है, which is either cop or EMS or DOJ. I mean, I think we'll try to cover a decent enough amount of number. Your cop prio only applies to, let's say you're a cop and the server has provided you a cop prio. वो सिर्फ आपके कॉप कैरेक्टर पे ही अप्लाई होगा. मतलब द मोमेंट यू सेलेक्ट टू कनेक्ट विद, और अगर आप ऑप्ट करते हो कि आप कॉप प्रायो के थ्रू सर्वर के अंदर कनेक्ट कर रहे हो, तो जो आपके कैरेक्टर सिलेक्शन स्क्रीन होएगा वहाँ पे यू विल ओनली बी एबल टू सेलेक्ट योर कॉप कैरेक्टर और ईएमएस कैरेक्टर, और कोई भी डिपार्टमेंट रिलेटेड कैरेक्टर ही आप सेलेक्ट कर पाओगे वहाँ पे. तो वो आपका स्टार्ट होगा. आई एम so there is a NRP thing planned for all the cops when they will get their roles. Immediately जैसे ही आप लोगों को roles मिलते हैं आपके, you guys will have the department prio. वो बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में हो जाएगा. आप लोग लियो जनरल ओसी में डिस्कस कर लेना. फ्लैश में भी, इफ़ यू वांट्स टू टॉक अबाउट इट हियर और लेटर, he can do it. He knows more, and Flash, I think, or Rankit can tell you guys more. But the moment you guys will have roles in the server and cop mains, उन लोगों को cop prio के लिए we'll start adding those priors. ठीक है. We're talking about priors, right? Cop priors. I just want to add one more thing, guys. Your contribution inside the server also, as a cop, also matters in priorities. So keep that in mind if you're a cop main. Yeah. Just wanted to clear that. Not cop, I think. I'll speak for all the departments. So Rishit hai here from DOJ, and then I think we don't have Tejinder or Sky, but Shampoo is here. So for EMS, for DOJ, for every place, it's obviously जो cop prio, we expect you to make your good use of that prio that the server is providing. तो आप आए and you give
your contribution. So we'll make sure कि हम लोग उस पे we'll monitor it very closely. Okay, so there should be a time frame also for criminals and robbers for their situations. Other than singing songs for robbers, the hostages are not getting any role play. Sometimes they just tell hostages to stand at the take more than 2-3 hours in of their unplanned robbery. ठीक है, I understand कि हाँ, I know it's very important. Some scenarios get a little heated up. Though I see a lot of times people having fun with hostages as well. Um, character पे depend करता है. If someone's character is a little like humorous, funny, and um, they're still criminals. वो कर रहे हैं आपके साथ. I think justifies. I cannot enforce second this, but हाँ, be mindful guys. थोड़ा सा all our players and ये environment जो है वो um, this whole यार लाइट environment भाई कोई अगर हॉस्टेज बनाए तो हॉस्टेज को वहां पे एंटरटेनमेंट तो कराएगा नहीं यार, लाइट में बिल्कुल तो वो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ. सो जिसमें दैट इज थिंग कि वी कैन नॉट एनफोर्स दिस, वी कैन नॉट हाँ डेफिनेटली हाँ एनफोर्स दिस. आप बी माइंडफुल. अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने पास्ट सिचुएशंस में देखा, अभी मैकेनिक्स कैसे होंगे दैट यू गाइस डोंट नो. सो मैं कोई जम्पशन अभी तुम लोग को नहीं देना चाहता, बट व्हाट आई थिंक इज कि लेट्स से आप किसी को हॉस्टेज बनाते हो, आप किसी पोजीशन लाइक पॉइंट तक पहुंचते हो जहां आपको कोई कोई भी हाइस्ट इनिशिएट करना है, और आप देखते हो कि अभी कोई हाइस्ट चल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको लेके घूम रहे होगे, राइट? यू हैव टू बी माइंडफुल फॉर दैट पर्सनस टाइम एंड यू हैव टू रिलीज हिम. सो थिंग्स लाइक दैट, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये खुद ही हो जाना चाहिए, राइट? तो दैट्स इम्पॉर्टेंट. डीओजे रिस्पॉन्सेस कब तक ऋषित? Responses will be out before the launch. Anyways, वॉक इन इंटरव्यूज होंगे तो आप सर्वर के अंदर जाके फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा जब भी लॉन्च होता है. तो या ऑल्सो वन मोर थिंग, आई सी पीपल passing comments in the PTS channel. Please like maintain the decorum. There is off topic chat, you can continue over there. Okay. So, how are we going to counter the aggression of gangs towards civilian? Because every gang member क्या कर लेगा, and then have resources, everything they suppress. ठीक है. So, Ferdin, I think if you already heard me say, what I said was कि कोई एक dependency हम लोग create करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक वो gangs appear होंगी आपको दिख जाएगा already कि there will be gangs will have to rely for some stuff to get from civilians in order to progress in a lot of things. And with that I think gangs अगर smart होंगी तो they will understand कि उनको सारे civilians से अपना relation कैसा रखना है. ठीक है. So with that being said, I think that should probably answer your question. I think जो आप पूछने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी बैक स्टोरी पीढ़ी से रिलेटेड नहीं है वो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी, तो क्या हर कोई फिल कर सकता है? और फिर आई थिंक मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया. तो अगर आप चाहो तो यू कैन मे बी थोड़ा सा इसको डिटेल में डाल सकते हो, बिकॉज अगर बैक स्टोरी उनकी पीढ़ी की नहीं है और वो फिल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि क्या वो दूसरा कैरेक्टर बना रहे होंगे शायद. So there could be multiple scenarios, but if you want आप थोड़ा सा मतलब you can put your question again थोड़ा डिटेल में, we'll come back to it. FT cooldown कितना है? Yeah, but I don't think really see Maxter that these things should matter. I mean अगर आप AFK हो 5 मिनट भी, तो I think you should get kicked. See, there'll be people, if let's say there will be people in the queue and you're AFK in the server, then you're already doing injustice to someone. ठीक है? तो 10 मिनट 15 मिनट फर्क नहीं पड़ता इन क्वेश्चन से, आई फील. टफ सर्वर मत रखना, पता चले लॉक पिक करने के लिए रोना रह गया जब किसी अब ये मतलब बहुत ही वियर्ड आस्क है, बट अगर आपको लगे कि आप लॉक पिक नहीं कर पा रहे हो, तो
there can be a very civil way to live in the server also, I guess. ठीक है, और नहीं कर पा रहे हो तो that is your character's flaw, right? Okay. अगर FPS नहीं आए तो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, आई थिंक आई कवर्ड इट. 16:9 works. 4:3 doesn't work for sure. और भी हैं रेजोल्यूशन, आई डोंट नो व्हाट ऑल इज वाइट लिस्टेड राइट नाउ, बट आप वो चेंज करोगे तो द सर्वर विल गिव यू नोटिफिकेशन. अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा हम लोगों के लिए तो इट विल आस्क यू टू चेंज इन 30 seconds or something, or else you will get kicked from the server. मेरी बैक स्टोरी पीडी की है, लेकिन फर्स्ट टाइम हैप्पी विद सिविलियन. इज इट ओके? यस. Is there anything called copyright? I think Jimmy, I answered your question. क्या हेली से कट के बंदा गया हूँ बाय मिस्टेक? क्या हेली से कट के बंदे मर गए? So वो it's not say okay. Let's not go to ban, but वो डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन है क्या एंड किस पर्पस में किया गया है. बाय मिस आई मीन okay, so by mistake you have written, then okay, I don't know how to even answer that question. Any department priors are there, guys, but again जैसा फ्लैश ने बोला, you need to definitely show your dedication उस कैरेक्टर के towards for us to keep बहुत constantly review होगा. That one thing will be very under a very close monitoring. uh, if the PC is slow, then what to do? 5 minutes I felt was decent. इससे ज़्यादा रखने का मतलब है कि then it will not just be called reconnect prio. Being very honest with you guys, 5 minutes से ज़्यादा reconnect prio, it will not fall in reconnect. It will just become a priority at some point in time. EMS और crim एक साथ कर सकते हैं. And also if we get selected for EMS, then characters buy करना पड़ेगा. So I think this is a question that someone had. Okay, thank you for reminding me about character slots. So character slot, definitely you have to plan your characters. You get one free slot from the server. आप एक character बनाएं, एक character खेलें. This is done with the intention to um, only have people who have made up their mind and are very dedicated to invest time on two characters. Uh, the whole point of the second slot or multiple slots being paid is this. We don't want कि आप disposable characters बनाएं, which is like in between. 5-6 दिन के लिए अगर आपके मेन कैरेक्टर पे आरपी नहीं है तो फिल करने के लिए फिलर की तरह कुछ भी with less progression you do bad RP. ठीक है, the purpose of doing one character is कि I know whoever, it seems like an investment right now, but whoever would be very interested कि वो टाइम डेडिकेट करेगा अपने सेकेंड कैरेक्टर के प्रोग्रेशन पे उतना ही जितना वो अपने फर्स्ट कैरेक्टर पे कर रहा है. I think then only it will make sense to buy. I won't say the reason I've not kept even two slots this time, or we all I think decided, it's not me. We all came to this conclusion, is we felt कि we want to make sure we don't want to see those disposable character scenarios जहाँ पर people would just make a character for a few days and it'll, because वो character definitely fast progression करेगा, because आप उस पर उतना time invest नहीं करोगे. ठीक है. Yeah. What tier of prio departments get? It's a custom tier. Um, we will update you. I think your department head will update you a little in details about it. Abhi, I think we are still in little early stages about
department prio, but I think it should be decent enough. Also department prio or cop prio, EMS, whatever prio जो भी है, वो that will be applicable to your only particular character, either it's PD, EMS, etc. Don't expect the perks given to the department prio to be, gelled along with your second character too. So ये clear करना था बात. It will be only for your cop character only. अगर आप कॉप में से आ रहे हैं और आपका एक सेकंड कैरेक्टर भी है तो उस पे वो प्राय एप्लीकेबल नहीं होंगे. Okay. Yeah, yeah. Thank you, Goldie bhai. Thank you. जी. Can we get limitation on abuses? So guys, with abuses, I think इसके first half वाली meeting में cover कर लिया था. Streamer friendly है. It's something you're not comfortable. You have to just use local OC and ask the person to stop doing it. आपको immediately stop करना है. और also मैंने वो भी समझाया था कि you need to know कि नो योर ऑडियंस, नो योर क्राउड, जिन लोगों के अराउंड आप आरपी कर रहे हैं उस टाइम. अगर किसी को नहीं पसंद है या नहीं करते हैं आप, डू नॉट स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट यू नीड टू असेस, जैसे रियल लाइफ में भी आप किसी से मिलते हैं, हाय हेलो, देन धीरे धीरे इफ यू यू नो सी कि ओके ही इज कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, देन यू गो टू दैट स्टेज. We are fine. I mean, obviously, we are not kids any here. We know कि if you in a group is comfortable using that language अपने आपस में, we should not have a problem with it. But अगर किसी को problem है but आप still उसके मना करने पे कर रहे हो, we will have a lot of problems with you then. Okay, please do not do that. कि मैं मैकेनिक में प्राय होती है नहीं. uh, I think we've covered most. We've heard in the last one that snitching is not allowed, Yeah, but that's not allowed. It's as yeah, simple as that. yeah. Let's keep it simple. उसमें कुछ है ही नहीं कुछ बात करने वाला. Yeah. स्निचिंग के नाम पे बहुत रगड़े हो चुके. So let's keep it away. So you're saying news reporter, private detective, investigator. So we would, if there would be a scenario जहाँ पे आपको लगता है कि you have to snitch but you have proper RP, we would wanna see just open a ticket, talk to us, okay? We wanna make sure कि आपके progression से बहुत सारे लोगों की RP नहीं खराब हो रही हो. So we wanna make sure कि that is being taken care of. Okay. Yeah. Forced RP is not allowed. Yeah, not at all. Any person feels that they're being forced for a certain RP, just use local OC. Okay. The audience of VLT RP, we know there are a lot of rules and about do's and don'ts. Most of the players there were so उन्होंने हम लोगों को हमने entertain किया. I want to request new people like me who got a chance to be here, try the best. So I think it's simpler. जो मैं बोलूँगा, the moment आप you get into the server, everyone is same and I feel कि उतने ही चांसेस हैं रूल टूटने के जितने आपके हो सकते हैं, शायद मेरे से भी टूट सकते हैं. You just have to be super cautious. Just make sure कि you read the rules. Uh, but I mean, it's all about enjoying the character, and I think it should be fine and should look nice. At least two characters should be free. I think already I have given a justification about it. We all together here feel uh, कि एक कैरेक्टर को प्रोग्रेस करने में it takes multiple not weeks but months properly progress करने में. I do not see a reason why people will have uh, you know will On need top of that, immediately. people get inspired and talk about so many international servers जहाँ पे
सिर्फ घुसने का $1000 $500 लग जाता है, कैरेक्टर स्लॉट्स का $1000 फीस है. So when we talk and preach lot of international things and server, and we are bringing it in our own country and trying to make a change and call it as a premium server, I think we should respect that thing, isn't it? We've called it a lot of times. We are a premium whitelisted server. So let that be. And we have a lot of servers जहाँ पे बहुत सारे character free मिलते हैं. So you can always try those servers and अपना role play वहाँ पे दिखा के you can always attract या build your audience. I mean, like that could be as simple as that, isn't it? Right, by. I mean, I'm just saying, कि guys, we are different because we are trying few things different. It's just if you want us to fall under the same pattern which has been happening, तो हम लोग कोई change ला नहीं पाएंगे. So that is what it is. Okay. A person is engaged with civilian RP, so does he need to fill any form for mechanic? नहीं. It'll see. So whenever mechanic RP start, जो server में जब भी start होगी, uh, आपको किसी ना किसी सर्वर में देर मल्टीपल वेज जिसके अगर आपको न्यूज़ मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तो आप जाके वहाँ पे अपनी आरपी इनिशिएट कर सकते हैं. अगर डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल. अगर मैं ओनर हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लोगों से फॉर्म भरवाऊँ, मैं इंटरव्यू लूँ डायरेक्टली, मैं लोगों से मिलूँ, दैट इज़ मी. देर कुड बी सम अदर पर्सन, जो कि रियल लाइफ में भी होता है कि सम पीपल आर मोर फॉर्मल, प्रोसेस ओरिएंटेड, कुछ लोग थोड़े कैजुअल अप्रोच होता है टुवर्ड्स फ्यू थिंग्स. तो आई मीन इट्स सिंपल. आप ओनर टू ओनर डिपेंड करेगा. आई डोंट नो हु बिकम्स ओनर, जो बनेगा उसके हिसाब से आई थिंक. Someone needs to understand that we are not IRL doctors, we have limited knowledge. हाँ guys, honestly, do not criticize doctors, trust me. Making fun or probably not respecting EMS RP, I personally will get very hurt and will probably not have a good conversation. ठीक है, they're trying. ठीक है, they're trying to give you a role play. I know कभी कभी कुछ गलत बोल सकते हैं, and we just have to have that थोड़ा सा leniency उनके लिए. हाँ, ठीक है. मतलब in this with this being said, the other way around, if we talk about doctors को लोग जो आके थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं उन चीज़ों को लेके, ये जो गैंग्स और क्रिम का हमने कॉप्स का अलग अलग किया है, अभी नेक्स्ट टाइम से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि गैंग्स कृपया करके पीडी को उनका काम और एसओपीज ना पढ़ाए, सिंस आप लोगों को भी एसओपीज इन एनी फॉर्म और अदर वे राउंड पता लग जाते हैं. सो प्लीज गैंग्स को वो ना पढ़ाए, पीडी को ना पढ़ाए, बिकॉज पीडी इज ऑलरेडी डूइंग देयर जॉब. एंड द सेम गोज विद पीडी, कि वो गैंग्स को उनके रूल्स और उनके चीज़ों के बारे में, हुड एरिया एंड थिंग्स के बारे में जितनी आरपी नॉलेज है वहीं तक रखें. बस अब पुराने सर्वर्स की नॉलेज यहाँ पे लाके थोड़ा सा वो मिक्सिंग हो जाएगा, तो उसको थोड़ा दूरी रखते हैं. मैं वही कह रहा हूँ गाइस, इट्स ऑल लाइक कि जैसे आपको पता है कि आई मीन कि लीजन स्क्वायर कहाँ है या एमआरपीडी कहाँ है, एंड आई नो कि इट माइट सीम कि थोड़ी ₹2 एक्टिंग है फॉर डे वन, बट वो करना पड़ता है. ठीक है, फॉर 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 योर इनिशियल प्रोग्रेशन यू नीड टू just switch off a lot of things that you know about GTA and just try to live, मतलब live your character. ठीक है. I don't know much, but does food get 5? Yeah, food and everything else will have a lot of everything has DK. And there are a lot of things to be done from civilian point of view. आई थिंक इस बार कॉप क्रिम से ज़्यादा आरपी सिविलियन के पास है, अगर करना चाहेंगे ठीक से. we've added lot of MLOs too and lot of features too, जिससे civilians को बहुत आरपी मिलेगी. So don't find out excuses to go into the crim side. uh, we can always, like Heba said earlier, कि we can always promote civilian RP and उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. So उस माइंडसेट में मत जाना कि जाएंगे गैंग गैंग करेंगे, वॉर करेंगे तो ही हमारे पास वॉचिंग और ये सब आएगा. इफ़ यू आर ट्रूली एन आरपी प्लेयर, आप अगर अच्छे से
सिविलियन आरपी करके कुछ कुछ भी करते हैं आउट ऑफ द ब्लू. वी हैव अ स्टूडियो टू जो हमने अपने लास्ट स्ट्रीम में शोकेस किए थे. There can be multiple events done there and lot of things other than that, lot of civilian jobs too. So yeah, उसमें आप लोग काम कर सकते हैं उस तरीके का. Yep, 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 yep. ठीक है गाइज, लास्ट फ्यू एंड आई थिंक 1-2 मिनट बाद बंद कर दियो ऋषित, पीटीएस. ठीक है, एनीवन, Hmm. ऋषित, शैम्पू, एनीवन, आई थिंक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस बिकॉज Hmm. आई थिंक अब रिपीट हो रहा है. Navya, I think your question is from last year's servers are ending, उनका RP gangs पे ज़्यादा focus होता है. Can we see something different this time? हम लोगों की तरफ से we have made sure. ठीक है, we have definitely made sure. um, that is, I mean, I know with introducing a lot of rules, it's a drag. वो अच्छा नहीं लगता कि हम बहुत rules है, so much to remember and all those things. But वो सब इसी mindset के साथ किया जा रहा है कि we are trying to do something new. uh, ठीक है. Can City Hall provide a mortgage license for business in the city to give legally loan is legal in role play? I mean, Prabal, who's stopping you? आपको कौन रोक रहा है जाके आरपी इनिशिएट करने से? नो वन इज स्टॉपिंग यू, राइट? तो अगर इफ़ यू हैव दिस आइडिया, वो इनिशिएट द रोल प्ले. अगर हम लोगों को लगेगा कि आपका प्रोग्रेशन अच्छा है तो आई डोंट सी हाउ दैट कैन नॉट बी डन. ठीक है. I've never done PDRP before, but I'm all up for learning. Should I be worried about my interview? नहीं, I think the interviewers are already mindful of the situation कि काफ़ी सारे लोग हैं वो learning के लिए आ रहे हैं. And I hope you have a good experience while interviewing. Can player have two characters, one with PD, one with AMS, basically two government characters? I do not see a problem with that, honestly, Felix. Launch timing क्या है? Launch timing बता दिया मैं, 7 to 8. Is there an auto shop job? Just RP it out. Compulsory to continue the backstory that has been filled in the form. हाँ, obviously. जो आपने बैक स्टोरी फिल किया है, जो हमने पढ़ा है, हमने उस बेसिस पे आपको वाइट लिस्ट किया है. अगर अब वो आप नहीं फॉलो करते हो या अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यू ओपन ए टिकट. इट्स बेसिकली, आई थिंक बैक स्टोरी इज usually a very crucial point for us to whitelist someone. So yeah. How many gangs? I think you guys are just being way ahead of yourself. Just stop thinking about gangs. अगर आप सोच रहे हो आप ऑलरेडी अच्छी आरपी से स्टार्ट नहीं करने वाले हो, ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड फॉर इट. ठीक है, अभी इट्स द स्टार्ट, लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. अगर आई थिंक यू जस्ट थिंक अबाउट योर इंडिविजुअलिटी, आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर का क्या ट्रेट्स है, उसकी क्या स्टोरी जाती है. जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट गैंग्स राइट नाउ. ठीक है. आई लिटरली वुड से कि मैं नहीं चाहता हूँ कोई 2-3 हफ्ते तक सोचे भी. एक एक महीना भी पकड़ के चलो. लेट्स नॉट इवन थिंक अबाउट इट फॉर अ मंथ. ठीक है. Also, I think Goldie Bhai asked a very interesting question about from Logic. So yeah, Logic, you can respond to us in off-topic chat. But I think this is all from me. I need some water. पर अगर कोई भी और like we have the whole crew here. अगर if I missed anything, guys, please take it away. भूल नहीं रहा कुछ. Okay. So I think Goldie Bhai covered everything. I would suggest the crew जो हमारे टीम में जो बैन वैन का काम ज्यादा देखते हैं, वो लोग थोड़ा सा रेफर कर दे कुछ चीजों को if they want to, so that would be better. I mean like उन लोगों का end of the day काम आसान होगा, the less the tickets, the less the reports. And if they want to specially mention something like Rishit, Shampoo, Rusher, Flash, Cadbury, Yeah, Karthik, हाँ. please, I want to mention exploitation mat karo, because we would be rigorously going through the logs and proper progression करो. पता चला हर दूसरे दिन तुम एक कुछ स्पॉन कर रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं है, but we will keep a track of everything.
एंड अगर कुछ बग्स मिलते तो बी ऑनेस्ट, पुट फॉरवर्ड द proofs, attach the proofs in the bugs channel ताकि our developing team can fix it at topmost priority. या मत करो कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन, अच्छा ही लगता है बैन देना, वो भी परमा बैन. That's Guys, new start हो रहा है. I would highly recommend like progression पहले पॉइंट पे रखो कि मेन थिंग स्टोरी बिल्ड प्रोग्रेशन अच्छे से इंटरेक्शन एंड ऑनेस्टली माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज टू रोल प्ले विद न्यू प्लेयर्स ज़्यादा लाइक एवरी टाइम आई हैव डन इट कि इवन गैंग्स अगर मैंने गैंग्स करी हैं फॉर एग्जांपल तो मैंने मेजॉरिटी टाइम गैंग्स सेम बंदों के साथ नहीं करी है सो दूसरे लोगों को भी आरपी मिलती है उससे और उससे लोगों से इंटरेक्शन वगैरह भी बढ़ता है तो प्रोग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तुम लोग प्रोग्रेस करो जिन लोगों के साथ तुम्हारी आरपी बिल्ड हो रही है उन लोग के साथ स्टोरी बिल्डिंग करो उन लोग के साथ एक्सप्लोर करो काफ़ी नए लोग मिलेंगे तुम लोगों को साथ में और उसके साथ भी आगे चल के बहुत अच्छी आरपी हो सकती है उसमें सो प्रोग्रेशन की पॉइंट बैंड्स अगर कोई फेल आरपी वगैरह कर रहा है ट्राई टू एजुकेट देम लाइक जितना हो सके ऑब्वियसली एनआरपी ओ सी मत चले जाना कि हाँ बट लाइक थोड़ा बहुत उनको अगर तुम जानते हो या पता है तो एटलीस्ट ट्राई टू एजुकेट देम अगर फिर भी एक ऐसे एक्सटेंड पे हो रही है तो यस ओपन अ टिकट तो हम लोग ऑब्वियसली देखेंगे वो बट ऐसा ऐसा दिमाग में लेके नहीं चलना कि भाई ये बंदा बैन ही करवाना है या ये बंदा नहीं होना चाहिए तो ऐसे लेके मत चलना नए आरपी प्लेयर्स भी आ रहे हैं काफ़ी तो लेट्स ट्राई कि वो लोग भी आगे चल के अच्छे से आरपी करें आगे चल के क्या पता वो लोग भी बहुत अच्छी आरपी दे सर्वर को एंड सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोच के मत करना आरपी मेनली ऐसा सोच के करो कि जिससे ओवरऑल सब सर्वर को भी पूरे सर्वर को भी आरपी मिला सो वैसे देखो कि सबको आरपीबी तुम बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के पीछे जाके या मैं बार बार एक ही चीज़ फॉलो कर करके आरपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ ट्राई टू डू समथिंग जिससे तुम्हारी तरफ भी लोग आने की ट्राई करें तुम्हें तुम्हारे साथ आरपी करना भी पसंद करें या तुम ऐसा आरपी स्टोरी लाइन दो लोगों को कि उससे आगे चल के लोगों को भी आरपी मिले एंड सर्वर को भी आरपी मिले सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेशन मेन थिंग वो करना और गैंग वगैरह का तो अभी गाइस मत सोचो अभी तो टाइम है काफ़ी गैंग में तो अब गैंग क्वेश्चंस भी मत ही पूछो क्योंकि गैंग क्वेश्चंस भी बिफोर गैंग अनाउंसमेंट्स वगैरह होंगी तो कोई एक मीटिंग वीटिंग रख लेंगे वो टाइम पे गैंग क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे अभी ये मत सोचो कि हम लोग 10 बंदे 15 बंदे बैठ के आए हैं कि आगे चल के यही करेंगे सो इट इज़ टू अर्ली स्टेज वो टाइम पे अभी ये चीज़ के लिए तो अभी जितना हो सके एंजॉय करो और अच्छे से एक कम्युनिटी बिल्ड करी जो है उसको और लाइक लेट्स मूव इट फॉरवर्ड और एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं दैट इज़ ऑल फ्रॉम For माय साइड crims, yep, thank you, Rishabh. For crims, guys, I would like to add one thing. कि एक चीज़ ना बहुत ट्रेंड में हो जाती है कई बार हम एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं लेट्स से बीइंग अ क्रिम आई एम डूइंग रॉबरीज इन द सेम वे फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है नो क्रिएटिविटी गाड़ी ला रहे हैं स्केप कर रहे हैं दैट्स इट तो इट यूज टू हैपन बिफोर कि यार लोग सोचते थे प्लान आउट करते थे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे विल टेक दीज काइंड ऑफ वेज ये कार लेके जाएंगे अभी नए नए प्लेयर आ रहे हैं नया नया प्लेयर बेस बन रहा है तो मे बी दे हैव मोर क्रिएटिविटी जो लोग अभी नई नई आरपी स्टार्ट करेंगे तो ट्राई टू डू आरपी विद देम प्लान आउट विद देम एंड ट्राई टू कम अप विद सम इनोवेटिव थिंग्स अदर देन जस्ट एक गाड़ी लेके गए उससे escape नहीं हो रहा बैकअप आ गया उससे भी escape नहीं हो रहा तीसरी बुला ली वो बैकअप आ गया सो डू समथिंग कि आप लोग को भी मज़ा आए काउंटर करने वाले बंदों को भी ज़्यादा मज़ा आए तो वही चीज़ है थोड़ा सा इनोवेटिव और क्रिएटिविटी I would like to answer the question asked by PP. Ki, take sometimes like cops taking better lines than the what do you say racers.
So in this, PD has a department named SCU, which handles the enforcement unit. So technically, they are trained, and I guess you have done cop RP from like more than 2 years, so you should be knowing this thing. And on this, I would like to add Rishit के as Rishit Hmm. stated कि cops भी line से ले लेते हैं, cops उन लोग से पहले jump ले लेते हैं. ये जो होता है ना, कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आप एक जंप के लिए जा रहे हो, कॉप आपसे पहले ले लेता है. ठीक है, ये आप ही लोग का सिखाया हुआ है उनको. आप लोग इस पैटर्न को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, वो लोग उसी से सीखते हैं, एंड देन दे डू द सेम. सो दैट्स व्हाट द थिंग इज. अब वही रेसिंग में भी अप्लाई होता है, वही रूट बार बार लोग जाते हैं and फिर लोग सोचते हैं कि कॉप्स भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, व्हाई आर दे और जिम्मी एक्सपेक्टिंग जैसा कॉप दिस तो ऑफ वीडियो बना बना के डालता है, लाइंस की, अरे ट्रिक्स की, टिप्स एंड ट्रिक्स की, मतलब क्या बताएं, समझ में नहीं आता मुझे. टूटा। Anyways, guys, let's have fun. Uh, Yeah. jokes apart, मतलब it's gonna be a very immersive experience. आप लोग को बहुत मजा आने वाला है. The way things have been put together. So uh, try to make the best out of it. And जाते जाते please would like आप लोग, if you could all just appreciate our the entire dev team, led by Lex Spy for and the crew for the immense hard work they've put in the last 20 days, particularly. Uh, Thank you everyone for joining. And see you on second inside the server. Guys, सो तो ये रहा सोल सिटी का मीटिंग हो गया. अब थोड़े कल होगा जैसे, तब तो चलो आज थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं यार. सही बनाए सब कुछ, बनते हैं सब कुछ. सो तो ये रहा उसका देखते हैं, इसका देखते हैं. अपनी फैमिली प्यारी नहीं है क्या तुझे? तुमको जो करना है करो, मैं डरता नहीं इन सब धमकियों से. आदि, get ready for your school. हाँ, shit यार. ये सब सेटअप करवाना पड़ेगा मेरे को ऐसे तो. खैर छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं. और कोई स्ट्रीम पे बंदा नहीं है क्या? नहीं. क्या करें, किसी कुछ है ही नहीं मिल सकता. लैपटॉप अच्छा नहीं है ना, इतना तो हम गेम खेल.
And hello. Okay.